Now the next one is factory requires 42 machines to produce a given number of toys in 63 days. So यहाँ पे you could see machines और days का relation and they are asking for the second part which is like how many machines are required to produce the same number of toys in 54 days. So first we could write as machine और दूसरी तरफ आप क्या लिख सकते हो number of days. अगर 42 मशीन्स हैं तो 63 डेज लग रहे हैं. अगर 54 डेज होंगे तो कितनी मशीन्स बनेगी वो हमें कैलकुलेट करना है. नाउ आई कैन अगेन सी दैट दिस इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन. एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम होगी. ठीक है. सो यहाँ पे हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन यूटिलाइज होगा विच इज लाइक x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2. x1 की वैल्यू ये हो गई हमारे पास, y1 is 63, y2 is 54. Substitute those values. 42 into 63 is equal to 54 into y2. Take 54 to the other side. So both of them like 63 and 54 are divisible with 9. So this would be 7 here, this would be 6 here, और 6 से हमारा 42 cancel हो जाएगा. This would give you 7. So how many machines would be there? 49 machines would be there. That's how you need to calculate the 11th.